Hello everyone, this video is regarding our upcoming course, that is the Ethics Foundation batch. From the name, you must be thinking कि ये सिर्फ foundation batch होगा. Foundation batch is just symbolizing that we are starting with the scratch and we will go up till making the ecosystem where you are able to fetch more than 125 plus marks, right? Now, I am not inflating this marks, right? We're going to give you the complete ecosystem, complete handholding to get this marks, that is 125 plus, right? इसके बाद 130 140 depend upon your individual capacity, uniqueness and luck. ठीक है? Here we are also mentioning that कि it's a one stop solution, right? Now we literally mean that कि it's a one stop solution, कि अगर ये कोर्स कर लिया तो इसके अलावा you need not have to do any of the course in the market. ना ही तुम्हें कोई आंसर राइटिंग कोर्स करना होगा, ना ही तुम्हें कोई केस स्टडी कोर्स करना होगा, ना ही तुम्हें अप्लाइड पार्ट के लिए कुछ काम करना है, ना ही तुम्हें कोई प्रैक्टिस कोर्स की जरूरत है, ना ही तुम्हें किसी मेंटरशिप की जरूरत है, राइट? ना ही तुम्हें किसी क्वालिटी इनरिचमेंट की जरूरत है. एवरीथिंग विल बी द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. कैसे होगा वी विल डिस्कस अभी, राइट? सो दिस विल वर्क ऑन दी फोकस पेडागोजी. सो जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, they know that ki how I cover things and what I believe. So I basically believe that ki we don't make courses. ये courses वाला जो culture है, I don't believe in that thing. Obviously at the front end you might see कि it's a course, but rather than the course, it's my responsibility to make this happen, कि तुम 125 मार्क्स लेकर आओ, राइट? आई विल बी रिस्पॉन्सिबल थ्रू आउट योर जर्नी फॉर your conceptual clarity, for your notes, for your one pagers, for your enrichment sheets, for your answer writing, for your mentorship, everything, right? So it's not just a course, rather I am taking your responsibility of your complete ethics module, right? And now this is, I will discuss this focus pedagogy, what I mean by that. But you need to understand that this complete ecosystem is built on four important pillars, and the first one is the clarity, right? So basically, this is one of the thing that I want to emphasize more here, कि ethics में basic ज्ञानबाजी काम नहीं आता. You have to learn in the very academic way. So concepts को academically पढ़ना, right? उनकी applications को पढ़ना, and उसके डायमेंशंस को कैसे अप्रोच करना है, उसके आंसर्स में कैसे फ्रेम करना है, everything will be done here. Clarity only not means the conceptual clarity. Clarity is also in decoding your questions, कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, right? And that you will be able to understand only when you are clear with your concept. So clarity is the first priority in this course. Apart from that, the second thing that I will be focusing more upon is the speed. First we will understand things, then we will understand how to write the answer, and ultimately we have to write the answer in a limited time. So we will understand that how we can write in a timely manner and how we can save time in some questions. So this is the most practical thing that you will ever come across in any course, right? ये बातें कोई नहीं करता है. If I give you time to write an answer, तुम आराम से लिख दोगे, बट एक particular time में, एक particular pressure में कैसे लिखना है, that we will understand in this course. Apart from that, there is enrichment included here. Enrichment means that whatever the course की sheet चाहिए तुम्हें, thinkers की sheet चाहिए, right? Examples चाहिए, case studies चाहिए, all the things, whatever examples चाहिए, whatever you required will be the part of this course. So you need not to refer any of the enrichment material in the market or any course. Apart from that, there will be complete hand holding by the faculty himself. So I will be guiding you completely. So there will be no mentors involved between you and me. You can directly contact me. You can directly show your answers to me. You can directly ask your doubts to me, right? So I will be available for you all the time, right? So I have said this thing that it is not only the course, rather I am taking the responsibility of your ethics. ठीक है? ये बस एक कोर्स नहीं है कि स्टार्ट हुआ, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में स्टार्ट होगा और खत्म हो जाएगा. नो. सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम टेकिंग ऑफ योर एथिक्स. नाउ लेट्स decode this focus methodology or the pedagogy that I'm going to start with. So the first F in the focus starts with the 0 to 125.
So we are going to cover this thing, and we are going to start with the very scratch, right? So we'll start with ki, what do you mean by ethics, and go till applied ethics, right? We will also see what is happening in the current affairs, right? We will also solve case studies, right? We will also see how we can enrich the answer, how we can make the diagrams in the answer, how we can write a good introduction, how we can write a good conclusion, right? So from the basic, the meaning of the concept, to these levels, we will be going that. Apart from that, it will be a dialogue based interactive classes, right? Dialogue based simply means that I will be interacting with you. Obviously, the classes will be offline and online mode both. So I will be interacting with you in the class. So ऐसा कुछ नहीं है कि something like the recorded mode format होगा या टीचर आया अपना ज्ञान देकर चला गया, right? So there will be some dialogue based thing, because in ethics views matters a lot, right? मेरी क्या व्यू है, तुम्हारी क्या व्यू है, एंड उस व्यू का चेंज होना, इट्स इंपॉर्टेंट. Otherwise, you will be not able to fetch a good marks in ethics. So ethics may, it's important to have a academic point of view from the ethical angle. It is very, very important, right? And the next thing that we have talked about, the crystal clear conceptual grounding in ethics, right? That we will be conceptually so strong, so grounded in the ethics, that you will be able to tackle any question in the ethics. That I can guarantee you, right? So I'm not here to promote any gyan baji, any template baji, any structure baji. No, you will be, trust me, you will require only 5 days to understand any structures, any templates, everything, blah blah things. If you are very good in concept, these things you can handle in only just 5 days. Trust me, and we will be doing it here. But there is a proper process to it. So the first thing, we will be covering your foundation, and in this foundation, I will make sure that you are able to understand all the lectures. That will be dialogue, and you are able to make your notes, class notes. Although I will be also providing it, but we are able to understand all the concepts, and we are able to make the notes, and so that with this we are able to complete the syllabus. Complete the syllabus means we are covering each and everything that is mentioned explicit in the syllabus as well as implicit in the syllabus. Okay. Apart from that, I will be also giving you a module tracking sheet. So in all my courses, I give this to the student, so that ki I and you both will be accountable to this. कि टीचर ने क्या पढ़ाया, क्या छोड़ा है, क्या पढ़ना बाकी है, क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़े, किस डेप्थ में पढ़े, समझ में आया नहीं आया, क्वेश्चन उससे सॉल्व हो रहा नहीं हो रहा. तो इट विल बी अ कंप्लीट ट्रैकिंग शीट वेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि किस पर्टिकुलर टॉपिक में तुम्हें दिक्कत है, राइट? अदरवाइज हम लोग बोलते हैं कि इथिक्स नहीं आ रहा समझ में. आफ्टर दिस मॉड्यूल ट्रैकिंग शीट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि इथिक्स का कौन सा सब पार्ट का सब टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आ रहा, राइट? Apart from that, next topic, next uh, structure framework is the organize. Focus ka F for foundation, O for organize. Organize simply means that we will be making the industry based notes, and I mean it literally, right? I have no shame in saying this thing ki I am referring to each and everything which is thrown in the market में जो भी है वो सब मेरे पास है, ठीक है? आई विल बी रिव्यूइंग ईच एंड एवरीथिंग, एंड मुझे लगेगा कुछ भी रिलेवेंट है, इवन 1% रिलेवेंट, आई विल टेल यू, राइट? बट यू नो दैट कि मोस्ट ऑफ द थिंग इन द मार्केट इज कॉपी पेस्टेड, एक ही चीज को 5 बार कर रहे हैं. एंड इफ यू विल गो एंड फाइंड दोज थिंग्स, एंड इफ यू स्टार्ट टू रीड दैट थिंग, तुम्हारा डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाएगा. एंड फ्रॉम योर लेवल, इट इज वेरी पॉसिबल दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या रेलिवेंट है और क्या रेलिवेंट नहीं है, राइट? सो ये काम छोड़ दो. आई विल बी searching all the notes, scanning all the things, and giving you the best possible notes, right? So there will be two types of notes that I will be giving you. One will be the class notes, right? So although I uh, encourage students to make their class notes, but even if you're lazy, you can use this thing, class notes. Apart from that, I will give you one pager notes, right? So you will be able to complete all the ethics in 30 to 40 pages. So 30 से 40 पेज में पूरी की पूरी ethics खत्म. And this one page note will have all the things, all the enrichment material like examples, all the case studies, all the diagrams, right? All the introduction and conclusion sets, सब कुछ होगा इसके अंदर, ठीक है? Apart from that, you will be getting that I name as quantum meta sheets, right? Quantum meta sheet will be
different handout that you will be given for different values like honesty, integrity, right? उसके एग्जांपल्स क्या क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में, उसका मीनिंग क्या है, उसको कब अप्लाई कर सकते हैं, उससे रिलेटेड डायग्राम क्या ड्रॉ कर सकते हैं. सो यू विल बी गेटिंग दीज शीट्स लाइक thinkers. See, try to understand that if UPSC asks question on the codes, and if you're able to decode this thinker, you will be able to decode its all the codes. क्योंकि जो भी आदमी है, तुम समझना कि आइडियोलॉजी आदमी की ऑलमोस्ट एक ही चीज के राउंड घूमती है, एक दो चीज के राउंड. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंकर एंड वी विल मेक अ नोट ऑफ इट. आई विल गिव यू अ शीट. ये थिंकर है, इसका ये व्यू पॉइंट था, इससे ये इंपॉर्टेंट कोट्स है, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. देन अगेन कोट्स की लिस्ट दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल इन योर एसेज में यूज कर सकते हो उसको, राइट? डायग्राम्स, राइट? एंड अगेन अप्लाइड एथिक्स. इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, इसमें और भी चीजें ऐड होंगी टाइम टू टाइम, एंड आई विल गिव यू वट एवर इज रिक्वायर्ड. सिंपल सा मंत्र है, वट एवर इज रिक्वायर्ड इट विल बी गिवन टू यू. ठीक है? सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर फॉर एनीथिंग, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, द नेक्स्ट थिंग सी इज फॉर कल्टिवेट, राइट? यहां तक तो हमने बात कर ली मटेरियल्स की, लेक्चर्स की, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट कि हाउ यू विल रिवाइज इट, right? So for revision, you have a DPT, daily practice test. Daily क्लास में, क्लास के पहले हो सकता है, क्लास के बाद हो सकता है, that I will inform you. You will given a daily 20 marker practice test and it will be getting evaluated also. तो समझ लो कि अगर 25 दिन क्लासेस चल रही है एंड दो दो क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो 50 क्वेश्चंस तो हमने यहाँ प्रैक्टिस कर लिए जो कि इवेल्युएट हो रहे हैं, एंड यू कैन ऑल्सो शो इट टू मी इन द क्लास और आफ्टर द क्लास. ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, we will be discussing, this is a unique thing that we are integrating here, that is mini case studies. So what generally people do, that की थ्योरी क्लास पूरी खत्म होती है एंड देन दे शिफ्ट टू द केस स्टडीज, राइट? तो उस टाइम पर कनेक्ट करना इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. So I will bring mini case studies in the classes, and just like if you have studied mathematics, or if you have studied physics in your junior classes, उसमें क्या होता है कि एक वी डिस्कस वन कॉन्सेप्ट एंड देन वी सॉल्व वन न्यूमेरिकल, देन वी डिस्कस वन कॉन्सेप्ट, देन वी सॉल्व वन न्यूमेरिकल. So this numerical will strengthen this concept. So similarly, I will bring mini case studies that will make you think. वो तुम्हारी thought process को बढ़ाएगा, and it will sharpen your decision making power, and that will be very helpful when you solve the case studies, a full 20 marker case studies. ठीक है? Apart from that, we will be solving the PYQs. So 2013 to 2025, all the PYQs of the ethics, means all the PYQs of the ethics we are going to discuss. We will solve some question in the class, we will write some model answer in the class, but we are going to discuss all of them, right? Apart from that, I will tell you later also that we will be having a 10 days workshop where we will be solving all the questions of it. Every question will be solved, right? So all PYQ done. ठीक है? Extra questions के लिए these DPTs you have, all every day you are practicing it. जो करते हैं ना, daily practice करो, right? So actually we are going to do it, and that with whatever we have learned in today's class, कल तुम्हारा टेस्ट है. So you will always, obviously you will be revising it and then coming to the class and giving the test. Apart from that, next one is upgrade. अब हमने रिवीजन कर लिया है, प्रैक्टिस कर लिया और पढ़ लिया है. नेक्स्ट बारी आती है कि जब हमने पढ़ाई कर ली, फाउंडेशन, जब हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, नोट्स बना लिया, वन पेज बना लिया, एंड सी जब हमने प्रैक्टिस कर ली, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कहां कहां कमी रह गई है, right? So then we will be requiring this thing, that smart answer writing templates. Then I will introduce the template also. ठीक है? So there is a perfect time for each thing. Template starting में नहीं पढ़ेंगे, template हम लोग पढ़ेंगे इन चीजों को करने के बाद, so that कि we will be able to improve your speed as well as structure, because you have already the content. अब तुम्हारे पास कंटेंट है तो यू विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज इट. समझ आ रहा है ना कि इफ यू हैव अ रूम, राइट, फर्स्ट यू ब्रिंग ऑल दी सामान, all your needs, necessary things, and then you organize things. So पहले होना जरूरी है, then you will organize something, right? Apart from that, there will be live answer enrichment session with the PYQ and expected question. So these session will be apart, the session apart from what we will be discussing in the lectures. So जो foundation में lectures है तुम्हारे 25, इसके अलावा अपग्रेड में 10 और lectures है जिसमें हम लोग लाइव आंसर राइटिंग करेंगे, एंड आई विल ट्राई टू इवेल्युएट इन देन एंड देयर. So for example, let me tell you the process of this. So let's say I'm giving you 7 minutes for a question, right? So question one, you will be writing for 7 minutes.
अगेन क्वेश्चन नंबर 2 आई विल बी गिविंग यू 7 मिनट. सो जिस टाइम तुम ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे होगे 7 मिनट, आई विल बी फ्री. सो दीज 7 मिनट आई स्पेंड इन चेकिंग एंड इवेल्युएटिंग द कॉपीज ऑफ योर्स. ठीक है, तो जो जो बच्चे इस टाइम फ्रेम पे भेज देंगे, आई विल बी चेकिंग देयर कॉपी और रिव्यूइंग इट एंड गिविंग देयर रिमार्क्स इन द क्लास इटसेल्फ. ठीक है, सो ये क्लास में तुम्हारा है ऑलमोस्ट इट्स डन. ठीक है, अगेन स्ट्रॉन्गर रिकॉल, बेटर रिप्रेजेंटेशन, जो भी रिक्वायर्ड है विल डूइंग इट. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी गेटिंग वन टू वन मेंटरशिप, राइट. देयर विल बी नो मेंटर between you and me. You can come directly to me, ask your doubt and make it done. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव वीकली मिनी टेस्ट. सो मोस्टली ऑन सैटरडे और संडे you will get informed. Mostly on Sunday, I guess, you will be having a weekly test. तो समझ में आ रहा है कि let's say if you have a class from Monday to Friday, right, you are getting 2 questions daily as test, which is going to evaluated also. वो evaluate भी हो रहा है. उसके बाद हर वीक में तुम्हारा टेस्ट हो रहा है. ठीक है, and after that also you have a one full length simulator test. ठीक है, सो इफ यू सबको क्लब कर दोगे तो 4-5 तो फुल एंड टेस्ट के बराबर हो गए क्वेश्चंस, राइट. दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एथिक्स प्रिपरेशन. इसी को बार बार रिवाइज करेंगे एंड आवर जॉब इज डन, राइट. सो फ्रॉम फाउंडेशन टू इनरिचमेंट एंड ऑल द थिंग्स. एंड अगेन when you have read some everything, when you have make the notes, सब कुछ हो गया, then you have practice, then come the upgrade. You will upgrade yourself with better answer writing techniques, right, better presentation and speed. And उसके बाद जो भी जरूरत पड़ेगी then you will ask your mentor कि और क्या improvement हो सकती है. So this is how we will focus your ethics preparation. So these are the course components and deliverables. I will go quickly with this. So ethics workbook where we will be going to solve PYQs, right? Complete PYQ. 13 से पेपर स्टार्ट हुआ है तुम्हारा ethics का, से लेकर 25 तक सारा हम लोग डिस्कस करेंगे. DPTs मैंने डिस्कस कर दिया कि 20 से ज्यादा जो है तुम्हारे शॉर्ट टेस्ट होंगे. इट्स नॉट 20, इट विल बी मोर देन 25 प्लस, बिकॉज आई विल बी टेकिंग 25 प्लस क्लासेस. ठीक है, then you have quantum meta sheets, right? Again, whatever the value added material is required, this is your value added material, VAM, right? Everything will be done here. One pager notes I will be giving you, that in 30 to 40 pages you will be able to revise your complete ethics, which will be consisting of every enriched material, diagram, everything. Apart from that, 25 lectures are there, right, in which we will study theory, case studies, answer writing strategies, whatever the current happening is required, what everything we will be reading in these lectures. Apart from that, you will be getting a class handout and it will be given daily to you. It is colorful written. ठीक है, तो कलरफुल भाई पीडीएफ मिल जाएगा. आई कैनॉट गारंटी ऑफ दी हार्ड कॉपी वाली बात. ठीक है, सो बट इट विल बी कलरफुल. यू विल गेट द पीडीएफ इन द कलरफुल फॉर्मेट फॉर श्योर. यू विल हैव वीकली मिनी टेस्ट. सो एवरी वीक आई थिंक योर कोर्स विल बी ऑफ 4 to 5 weeks. ठीक है, so you will be having, I think your course will be of 5 weeks, around 5 weeks. So you will be having 5 weekly tests. Apart from that, you will have one full length test. These live session again we will solve question. ठीक है, मेरे सामने तुम बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करोगे. आई विल बी ऑल्सो रिव्यूइंग योर क्वेश्चन एंड डिस्कसिंग दी मॉडल आंसर विथ यू. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव वन टू वन मेंटरशिप जो कि डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी. ठीक है, सो इफ यू हैव एनी डाउट क्वेरी, राइट, you can reach to this number and ask about this course. And you can also visit this website sunyaias.com to enroll with this course. Or wherever you are watching this video, you can check the description or the pin comment. You will be getting all the details of this course and also the link, right? So that's all for this video. We will meet soon. Thank you everyone and bye bye.